हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 4 फॉर द चैलेंज फॉर 1 लाख कैपिटल। ओके, सो आज यदि आप देखो मार्केट सेंटिमेंट तो आज निफ्टी 50 102 पॉइंट्स से डाउन है। ओके, और इसी हिसाब से आप यदि देखो तो सेक्टर्स मिक्सअप है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी बैंक ये नेगेटिव है, बट निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया, निफ्टी आईटी ये पॉजिटिव है। तो थोड़ा बहुत मतलब ये मिक्स सेंटिमेंट है। तो विल सी मतलब किस सेक्टर में हमें जाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 जो कि 85.86 पॉइंट डाउन है, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ विल गो निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑटो बैंक के स्टॉक्स पे हम लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे और ट्राई करेंगे कि आइडेंटिफाई करने का कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो कि हम मेरे सेटअप के हिसाब से वो फुलफिल हो रहे हैं क्राइटेरिया। ओके, तो मैं अपने दूसरे स्क्रीन में मैं देख रहा हूँ, उसमें मैं दो चार स्टॉक्स ऐसे ढूंढ रहा हूँ जो कि निफ्टी ऑटो और निफ्टी पीएसयू बैंक के हैं। तो मैं देख रहा हूँ फिलहाल। तो हमने भारत फोर्ज स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। सो लेट्स ऐड इन द टर्मिनल। ओके, सो I'm opening the chart for the Bharat Forge. So if you see 154 quantity I have added. Okay, and at 1620 I am planning to sell this. Okay, so let's the price come near to 1620. So yeah, now I put the order placed, but the order is still not executed. This is just waiting for that. It's still in pending order. Okay, the position is not yet get fulfilled. So if you see the order, it's in open state. Okay, and position also is not there anything. So let's wait for some time to get this order fulfilled. So now if you see the order got executed, and in the position I'm able to see that. Okay, so it's now it's showing 200 some like loss in this trade. So let me open the terminal with the position. So I am planning to put the SL at 1632. So let me change this chart. This is for Dr. Reddy. Okay, sorry, I need to open Bharat Forge. Okay, so let me open that.